Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, we are on alphabet T. So let's continue with that. Today is the second day for alphabet T. So for today, the first idiom is that ship has sailed. When we say that the ship has sailed, it means okay. So it means that we are saying that it is too late to do something. जब कोई काम करने में देरी हो जाती है तो हम बोलते हैं क्या, इट इज टू लेट टू डू समथिंग, और इन इडियोमैटिक मैनर वी कैन से इट दैट शिप हैज सेल्ड. ठीक है. तो जैसे बोलते हैं कि अब चिड़िया चुग गई खेत वाला जो सीन है, तो आप इस उसी इडियम से या मुहावरे से इस इंग्लिश इडियम को आप रिलेट कर सकते हो. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट I wish I had asked a promotion, but I think that ship has sailed. ठीक है. तो पहले सोचा था कि प्रमोशन मांग लेना चाहिए, बट अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है तो प्रमोशन मांगने का कोई रीज़न नहीं है. ठीक है. तो उसको बोलेंगे क्या, दैट शिप हैज़ सेल्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, we have the second idiom which says the bad egg. बैड एग का मतलब होता है कोई खराब इंसान. अब एग तो ठीक है बट इट इज बैड, तो बैड कैन बी डिसऑनेस्ट पर्सन वी कैन से. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस व्हाट वी कैन से इज वी कैन से दैट he is always creating drama at work. He's the bad egg. जो इंसान हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है तो दैट कैन बी नोन एज अ बैड एग, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है. ठीक है. या तो आप इसके बारे में फ्रेम कर सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट को एज अ सोसाइटी यू कैन टेक. सोसाइटी के अंदर जो बैड एग्स है, जैसे कि डाउरी सिस्टम इट इज, और सती प्रथा इट वॉज, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को भी यू कैन कॉल देम बैड एग, या फिर प्रीजुडिसेस अगेंस्ट समवन, सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो बैड एग. तो उससे रिलेटेड अ सेंटेंस यू कैन फ्रेम. ठीक है. दैट माइट हेल्प यू टू convince your checker, the one who would be checking your file or your sheet, that you know things. ठीक है. And you take things in a positive manner. Now moving on to the third idiom which says the bee's knees. अब सोचो बीज के बारे में बीज के बारे में सोचेंगे एंड थिंकिंग अबाउट देयर नीज. सो वॉन्ट इट बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट वी वुड बी थिंकिंग. ठीक है. तो बस उसी को डिफाइन करता है क्या, बीज नीज का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अगर कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसको बोलेंगे क्या, द बीज नीज. जैसे कि द न्यू रेस्टोरेंट in the city
is the bee's knees. You must try it. कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, जैसे शी थिंक्स हर बॉयफ्रेंड इज द बीज नीज. She thinks that her boyfriend is the bee's knees, um, and hence she loves him the most. ठीक है, तो द बीज नीज ओवर हियर एंड द बीज नीज ओवर हियर. सो बीज नीज का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज जो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, हर कोई राइटर सोचता है कि द थिंग दैट ही इज राइटिंग इज द बीज नीज, तो उससे भी रिलेटेड आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. और बहुत सारे मूवी के जो एक्टर्स होते हैं, दे थिंक दैट दे आर एक्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, तो दे शुड बी प्रोवाइडेड विद मोर ऑफ द वर्क्स, so that can also be framed into this form of sentence by using this idiom. We are moving on to the next idiom, which says, the fourth one, the big fish. The big fish refers to the main leader. The main leader. अगर हम बिग फिश की बात करते हैं तो इसको याद कैसे करेंगे? एक तो बिग है, बिग है तो सबकी नजरों में आएगा, जो सबकी नजरों में आता है वो कौन होता है? हमेशा लीडर होता है. तो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर व्हाट? अ बिग फिश व्हिच सेज the main leader. Big fish could be referred to as the main leader. Now, in order to frame its sentence, we can say that she is the big fish in the tech industry, known for her innovative ideas. ठीक है, तो बिग फिश है मतलब कि कोई मेन लीडर है इन द टेक इंडस्ट्री. कोई मेन लीडर कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपने देखा हो द शार्क टैंक, तो शार्क टैंक के अंदर जितने भी बिजनेसमैन आए थे बहुत बड़े बड़े, तो आप उनका नाम लेकर के यू कैन जस्ट राइट. ठीक है, तो उससे रिलेटेड यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द फिफ्थ वन which says the devil is beating his wife. डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ का मतलब क्या हुआ? ये इडियम थोड़ा सा ऑपोजिट चलता है फ्रॉम द मीनिंग दैट इट पोजेस. तो इसका मतलब क्या हुआ? सनशार, बारिश भी हो रही है एंड द सन इज ऑल्सो शाइनिंग ब्राइटली, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, दैट मीन्स सनशार. यू कैन से सनशार. या फिर अनदर थिंग दैट यू कैन कॉल इट इज कि बारिश भी हो रही है, इट इज रेनिंग and the sun is also shining, the thing that make up the rainbow and the thing that makes the sunflower happy. So with that you can relate this idiom. So we can say that um the devil is beating his wife today. It's like nature is showing its power, we can say, or you can say beauty. ठीक है, तो like this you can frame a sentence. Or another sentence that we can frame is the devil is beating his wife today. I am stuck
in this weird weather. या तो आपने इसको एज अ पॉजिटिव थिंग यू हैव टेकन, या फिर आप थोड़े इरिटेटेड हो बिकॉज यू हैव अ मीटिंग टू अटेंड, तो उससे भी रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस लाइक दिस. यू कैन फ्रेम सो मेनी sentences on this particular idiom, which means sun shower, or another meaning we can write sun is shining while it rains. And this idiom is basically related to weather. ठीक है. There are two weather. One weather is this, and another weather is this. ये वो वेदर है जो मौसम विभाग से रिलेटेड होता है, ये वो वेदर है जो हमारे इंग्लिश से रिलेटेड होता है, जिसका मतलब और से भी रिलेट कर सकते हो. ठीक है. देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ वेदर, तो रिमेंबर, नो नीड टू गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू वेदर्स. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom which says the sixth idiom, the die is cast. Die is cast मतलब एक बार you have rolled and then you have thrown. अब जो नंबर आया that has been decided. Decided का मतलब क्या हो गया? Decision has been made. Die, you took the die, you just casted it, and the number that came will now take the things further. So that means die is cast, that is decision has been made. So we can say that after submitting my resignation, die is cast, there's no turning back now. ठीक है. या तो ये कह सकते हो, या फिर अनदर सेंटेंस दैट यू कैन फ्रेम इज, एक बार आंसर शीट में आंसर लिख लिया है, सबमिट कर दिया शीट, बाहर आ गए हो, यू कैन नॉट गो इनसाइड एंड जस्ट चेंज योर आंसर जस्ट बिकॉज यू रिमेंबर्ड कि मैंने ये नहीं लिखा, लाइन ड्रॉ नहीं की, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ऐसे नहीं कर सकते. तो दैट विल बी टेकन एज द डिसीजन हैज बीन मेड एंड यू डिसाइडेड टू सबमिट इट, hence submitted. Now nothing can be done. Moving on to the next idiom, we have इसी का उल्टा है जो कहता है क्या, द ज्यूरी इज आउट. ज्यूरी इज आउट का मतलब क्या है? डिसीजन हैज येट टू बी मेड. अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी डिसाइड करना बाकी है, तो वो बोलते हैं क्या, ज्यूरी इज आउट. सो we can say that the jury is still out on whether the new policy will be effective or not. ठीक है. तो this refers to jury is still out. Still out का मतलब या तो decision has yet to be made या फिर no decision is taken yet. ठीक है. तो that refers to the jury is out. Then we have the another idiom which says most known idiom, that is the elephant in the room. एलिफेंट इन द रूम का मतलब हो गया, एलिफेंट है तो मतलब बिग से कुछ होगा, और रूम के अंदर बैठा हुआ है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम, तो बिग प्रॉब्लम आप बोल दो. एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट से आ गया बिग, एंड इन द रूम बैठा है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग इट, तो बिग प्रॉब्लम
that everyone is ignoring. ठीक है, तो elephant in the room का मतलब क्या हो गया? The big problem that everyone is ignoring. So we can say that the elephant in the room is that we are running out of budget and we need to cut cost. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? पैसे की प्रॉब्लम होती है, दैट इज द बजट प्रॉब्लम. तो उसी से रिलेटेड देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इज द एलिफेंट इन द रूम है. मतलब क्या है? बजट की प्रॉब्लम हो रही है जिसको सब इग्नोर कर रहे थे, बट द वन पर्सन और बॉडी बॉट इट इन फ्रंट और सबके सामने ले आया. तो जो कह रहा है क्या कि बजट जो है वो रनिंग आउट हो रहा है, देयरफॉर इट नीड्स टू बी कट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव the end justifies the means. That means wrong methods adopted for self mean or main purposes, we can say main purposes. ठीक है, तो अगर मीनफुली अगर कोई काम हो रहा है तो दैट विल बी रेफर्ड टू एज the end justifies the mean. In order to frame its sentence, we can say that he believes that the end justifies the means, so he'll do anything that he'll do anything to win the election. बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सेंटेंस है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने के लायक ये फ्रेम है फॉर इंडियन सिटीजन्स या फिर पॉलिटिशियंस, वी कैन से. सो द एंड जस्टिफाइज द मीन्स. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द 10th one, which says the graveyard shift. ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कुछ दिन की शिफ्ट कर रहे होते हैं, कुछ रात की शिफ्ट कर रहे होते हैं, खास करके ये मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर व्हेन दे आर सिटिंग बैक होम. सो दे मस्ट बी डूइंग देयर ड्यूटी और मस्ट बी ऑन ड्यूटी एट द नाइट, या फिर कोई भी ऐसा काम जो रात के दौरान किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्या? द ग्रेवयार्ड शिफ्ट. तो वर्किंग ड्यूरिंग नाइट आवर्स, मेजरली 8 PM के लगभग के बाद अगर आपने काम शुरू किया है तो उसको बोलते हैं क्या? ग्रेवयार्ड शिफ्ट. ग्रेवयार्ड शिफ्ट क्यों? क्योंकि दिन में तो कोई भी बैठ जाता है, रात में थोड़ा खतरनाक इट बिकम्स बिकॉज ऑफ द हाउलिंग साउंड्स और आयरी साउंड्स और द नॉइजी थिंग्स दैट हैपन्स, तो उसकी वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो बस उसी को बोल रहे हैं. नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, वी कैन से दैट I have been working the graveyard shift at the hospital, so I am not getting much sleep these days. ठीक है,
So that refers to the graveyard shift. No matter how much you sleep in the morning, but the night sleep is required by each one of us. Otherwise, it will create a problem, and the name of the problem will be given to you in the comment box. And hint to that problem is, if you have seen the movie, namely The Sky is Pink. In that movie, Priyanka Chopra had that problem because she was busy taking care of her daughter. तो उस दौरान she got this problem, and therefore she had to undergo so many therapies and we can say psychological sessions, after which she became well. So there was a problem or disease, we can say psychological disease it is. So that name of the disease you will have to comment down. Now we are moving on to the next idiom, which says, the 11th one, green eyed monster. ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जेलस. अगर कोई आपसे जेलस है तो उसको आप क्या बोलोगे? द ग्रीन आइड मॉन्स्टर. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट डोंट लेट द ग्रीन आइड monster ruin your friendship. Just go and talk to them about it. ठीक है. तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर ये शायद हमने पहले भी किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग कलर्स. पिंक, ब्लू, ग्रीन. ग्रीन बेसिकली रिलेटेड था हमारे गार्डनिंग सेक्शन से, बट सिंस नाउ वी आर हैविंग ग्रीन आईज, so and it is a monster, so obviously green gardening, the beauty thing won't be related to it, so therefore the jealousy enters in. ठीक है. So now we are moving on to the next idiom, which says, the man in the street. मैन इन द स्ट्रीट तो कोई भी हो सकता है, तो कोई भी हमारे लिए क्या होगा? ऑर्डिनरी. अनलाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो एनी ऑर्डिनरी पर्सन इज द मैन इन स्ट्रीट. ठीक है. कोई भी आदमी गली में डोलता हुआ will be for us a man in street. So in order to frame its sentence, what we can say is, we can say that according to the man in the street, the smartphone we can say, smartphone is a real गेम चेंजर. ठीक है. तो बहुत सारे लोगों के मुताबिक कोई कुछ कर रहे हैं, बट द थिंग दैट हैव चेंज्ड इज, जिसने गेम चेंज कर दिया है, दैट इज द स्मार्टफोन. दिस इज हाउ व्हाट वी कैन फ्रेम. अनदर सेंटेंस दैट वी कैन फ्रेम ऑन दिस इज, the man in the street seems to think that the new policy will affect the economy. तो जनरलाइज स्टेटमेंट जो आप फील करते हो अकॉर्डिंग टू योर बेसिस, अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स, तो आप इसके अंदर वो जनरलाइज स्टेटमेंट regarding an ordinary person you can frame, and hence you can frame sentences if it comes in your way while answering the exam. ठीक है. Moving on to the next idiom for today, it is
It says the last straw. Last straw means last problem in series of problems. एक टाइम होता है when problem starts, that is the toothing ache or teething problems or teething aches like that. तब प्रॉब्लम शुरू होती है. अब प्रॉब्लम शुरू 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 करते करते now you have reached to an end जहां पर प्रॉब्लम खत्म होने का टाइम आ गया. there have been a series जहां पर प्रॉब्लम 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 थी. now you have come to an end of that series. तो उसके लिए we have another idiom जो कहता है क्या, it says the last straw, that is the last problem in the series of problem. Now in order to frame its sentence we can say that losing my job was the last straw. I know I need to go back to home now. अब जॉब निकल गई है, ठीक है, नेक्स्ट जॉब यू आर नॉट गेटिंग, सो दैट इज द रेफरेंस टू द प्रॉब्लम. कितने बुरे से बुरा जो आप सोच सकते हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज द लास्ट स्ट्रॉ. सो दिस वॉज नोन एज द लास्ट स्ट्रॉ and we shall continue further in the next class. So we shall stop our lecture today over on this only. Until then, stay tuned and thank you for watching.